নমস্কাৰ স্বাগতম এতিয়া বাতৰি ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই উত্তৰ কাছীৰ সিলকিয়াৰা টানেলত আবদ্ধ হৈ থকা 40 জন শ্ৰমিক অৱশ্যে আটাইকেইজন শ্ৰমিক সুৰক্ষিত আছে আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ অহৰহ অক্সিজেন আৰু সময় সময় খাদ্য যোগান ধৰাৰ লগতে জৰুৰী ঔষধো দি থকা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ ধামীক ফোন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে 6 জনীয়া পেনেল গঠন কৰিছে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে সিলকিয়াৰা টানেলত আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰো দুজন শ্ৰমিক হৰাইজন্টেল ড্ৰিলিং মেচিন নিয়া হৈছে আবদ্ধ টানেল মুকলি কৰিবলৈ 900 mm ব্যাসৰ প্ৰকাণ্ড পাইপেৰে আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক উলিয়াই অনাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে হৰাইজন্টেল ড্ৰিলিং মেচিনেৰে সুৰংগ কৰি পাইপেৰে আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক উলিয়াই অনা হ'ব শ্ৰমিকসকলক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এনডিআৰএফ এছডিআৰএফৰ ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে পাইপৰ জৰিয়তে অক্সিজেন যোগান ধৰা হৈছে 40 জন শ্ৰমিকক আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক পানী আৰু খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে বুলি জনায় উত্তৰ কাছীৰ চক্ৰ বিষয়া প্ৰশান্ত কুমাৰে দেওবাৰে পুৱা প্ৰায় 5 বজাত সিলকিয়াৰা টানেলৰ এটা অংশ ভাগি পৰাৰ ফলতে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল 40 জনকৈ শ্ৰমিক উত্তৰ কাছীৰ সিলকিয়াৰাৰ পৰা দণ্ডাল গাঁৱলৈ নিৰ্মাণ কৰি আছে টানেলটো উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰ কাছীৰ দণ্ডাল গাঁৱৰ সৈতে সিলকিয়াৰা সংযোগ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চাৰধাম পথ প্ৰকল্পৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এই টানেলটো ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে উত্তৰ কাছীৰ পৰা যমুনোত্ৰী ধামলৈ 26 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা হ্ৰাস কৰা আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলৰ ভিতৰত অসমৰ 2 জন বিহাৰৰ 4 জন ঝাৰখণ্ডৰ 15 জন উত্তৰ প্ৰদেশৰ 8 জন পশ্চিম বংগৰ 3 জন উৰিষ্যাৰ 5 জন উত্তৰাখণ্ডৰ 2 জন আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ 1 জন আছে और उत्तराखंड मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया हिस्से हमें सुनाब विचारिছোঁ नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है और जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी जो है उनकी कुशलता से बाहर आ जाएं इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुशल हैं और लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है सभी लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं भारत सरकार से लगातार बात हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सारी घटना को नज़दीक से देख रहे हैं जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जहां भी जिनको निर्देश होने हैं वहां से हो चुके हैं और हमने ये भी कहा है कि चूँकि टनलों का काम हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है जगह जगह पर टनल बन रही है इसलिए निकट भविष्य में हम जितनी भी टनल बन रही है उनकी भी सभी की समीक्षा करेंगे एक बार की सभी टनलें किस प्रकार से सुरक्षित तरीके से आगे भी जो है उन पर काम चले और सुरक्षित तरीके से उनका निर्माण हो क्योंकि आने वाले समय में ये चुनौतियां हमारे सामने आनी भी हैं और कभी इस प्रकार की घटना होती तो उसके लिए भी त्वरित रूप से जल्दी सहायता मिल जाए जल्दी से जल्दी उनका समाधान हो जाए আমাৰ সাংবাদিকে অহৰহ তথ্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰি আছে আৰু সেই স্থানতো গৈ আমাৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈছে কেইবাটাও তথ্য সহকাৰে আমাৰ সাংবাদিক অঞ্চল সিঙৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো इस घटना को नजदीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं last 50 hours the rescue operations of the 40 laborers who have been stuck inside this tunnel that you see behind me is ongoing over the next few hours probably 24 hours it might take to finally get all these laborers out. Now what is happening in the rescue operations, I'll just try and explain it to you. These machines that you are seeing on your screens at this point in time, these machines have been specially been roped in from the capital Dehradun and the main job of this machine is to drill a hole through the debris that has been made. Remember, almost 50 meters of debris is present before the laborers could be rescued and these machines that you are seeing on your screens right now, these machines have specially been brought in from Dehradun. At this point in time, a platform is being made inside the tunnel to establish this machine so that the operations could start. Once the machine is established, then these pipes that you will see on your screens at this point, these pipes would then be drilled inside the debris and once these pipes are drilled inside, then the laborers who are present inside would eventually crawl out from these pipes finally. Over the last 50 hours, the rescue operations has continuously been going on. Initially, the rescuers thought that if they remove the debris, then it would be easy for them to take all the laborers out and hence machines like these bulldozers were being used to remove the debris.
but since as soon as the debris was being removed, new debris used to fall, and hence the rescue operation was at zero, absolutely zero. At this point in time, what sources within the rescuers team have confirmed to CNN News 18 that very little to no work has been done because of the conditions that prevail inside, because as soon as they try to remove the debris, new debris falls from the top, making sure that there is no headway that can be made. Now these special machines have finally been brought in, and these machines can be seen as one of the hopes through which all these laborers can finally come out and see the light of day. When will that happen? That is a big question mark. But yes, rescuers are working round the clock to make sure that all these people who are stuck inside, they are safe. Food is being provided to them, food items such as dry fruits which can be blown through the air, through the oxygen pipe that has been made, are being provided to them. But yes, still they are not been getting any solid food for the last 50 hours now, and the rescue operations are unlikely to complete within the next 24 to 36 hours as well. So time is something that is not on the hands of rescuers. Time is something that is definitely running out for the laborers who are stuck inside. How quickly can the rescuers now go ahead and make sure that all these people who are stuck inside are taken out safely? That is a big question mark, and that is the answers that we are seeking for at this point in time. আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক অঞ্চলে কৈছে সেইখিনি কথা যে কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আৰু কিছু প্ৰশাসনীয় লোকৰ আৰক্ষীৰ কিছু ভাষ্য আছে শুনাই লৈছো। कॉल किया जा रहा है कि वहाँ पे रेस्क्यू कार्य चल रहा है, हाँ, जिसके द्वारा उन्हें सकुशल आज शाम तक उनको बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप परेशान ना हो। ठीक, आप कौन बोल रहे हैं उनके? हम मामा बोल रहे हैं, छोटा मामा। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम है राजेश बेदिया। ठीक है सर। Well, let's tell you more about this rescue operation. আৰু ইতিমধ্যে আমি সেই মেচিনবোৰৰ দৃশ্যও দেখুৱাইছোঁ। কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বৰ্ণনা আমি আগবঢ়াইছোঁ। অক্সিজেন, পানী আদি বিভিন্ন লগতে খাদ্য সামগ্ৰীও যোগান ধৰা হৈছে নিৰ্দিষ্ট পাইপৰ জৰিয়তে। কিন্তু এতিয়াও সকলো উদ্ধাৰকাৰী দলৰ হাতত নাই, সেই কথাটো আমাৰ সাংবাদিকে কৈছে যে সময় বাগৰি গৈ আছে, কিন্তু উদ্ধাৰকাৰী দলে যৎপূৰ্ণ আছে, চেষ্টা চলাইহে আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। বিভিন্ন নতুন মেচিন বা ইকুইপমেণ্ট অনা হৈছে, সেইবোৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। সেইবোৰৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছতো এতিয়ালৈকে তাত আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই, আৰু হয়তো কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব সকলোৱে। এনেধৰণে উত্তৰাখণ্ডত উত্তৰ কাশীৰ চিলকিয়াৰা টানেলত 40 জন শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ আছে, আৰু তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে যৎপূৰ্ণ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে। আবদ্ধ শ্ৰমিকক অহৰহ অক্সিজেন আৰু সময়ে খাদ্য যোগান ধৰাৰ লগতে জৰুৰী ঔষধো দি থকা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ ধামীক ফোন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে। ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে 6জনীয়া পেনেল গঠন কৰিছে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে। চিলকিয়াৰা টানেলত আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰো 2জন শ্ৰমিক। হৰাইজণ্টেল ড্ৰিলিং মেচিন নিয়া হৈছে আবদ্ধ টানেল মুকলি কৰিবলৈ। 900 mm ব্যাসৰ প্ৰকাণ্ড পাইপেৰে আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক উলিয়াই অনাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে। আৰু কিছু ভাষ্য আহি আছে, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ শুনাব বিচাৰে। और इसमें जो फंसे हुए वर्कर्स हैं उनको ऑक्सीजन, पानी और खाद्य सामग्री भी उनको मुहैया कराया गया है। तो फ़िलहाल वो सुरक्षित हैं, और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 50-60 मीटर का एरिया है जो एक खुला एरिया है जहाँ पर वो फंसे हुए हैं। तो वो भी एक अच्छी बात है कि उनको मूवमेंट करने के लिए जगह है, कैविटी में नहीं है, वो सेफ़ हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द रास्ता बनाया जाए। NDRFৰ DIGৰ এয়া ভাষ্য। তেওঁ কৈছে চেষ্টা চলাই থকা হৈছে যে ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ, মানে তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে যিটো ৰাস্তাৰ প্ৰয়োজন সেই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। কিন্তু হয়তো কিছু সময় লাগিব, অপেক্ষা কৰিব লাগিব আমি। হৰাইজণ্টেল ড্ৰিলিং মেচিনেৰে সুৰংগ কৰি পাইপেৰে আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক উলিয়াই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা NDRFৰ DIGগৰাকীয়ে কৈছে। শ্ৰমিকসকলক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ NDRF SDRFৰ ধাৰাবাহিক অভিযান মুঠতে অব্যাহত আছে। পাইপৰ জৰিয়তে অক্সিজেন যোগান ধৰা হৈছে 40 জন শ্ৰমিকক। আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰা হৈছে, আৰু তেওঁলোকক আমি জনামতে পানী আৰু খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰি থকা হৈছে অহৰহভাৱে। দেওবাৰে পুৱা প্ৰায় 5 বজাতেই চিলকিয়াৰা টানেলৰ এটা অংশ ভাগি পৰাৰ ফলত তেওঁলোক তাত আবদ্ধ হৈ পৰে।
উত্তৰকাশীৰ চিলকিয়াৰাৰ পৰা দণ্ডাল গাঁৱলৈ নিৰ্মাণ কৰি আছে এই টানেলটো উত্তৰকাশীৰ বা উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশীৰ দণ্ডাল গাঁৱৰ সৈতে চিলকিয়াৰা সংযোগ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এই টানেলটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চাৰধাম পথ প্ৰকল্পৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে টানেলটো ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে উত্তৰকাশীৰ পৰা যমুনোত্ৰী ধামলৈ 26 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব হ্ৰাস কৰা আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলৰ ভিতৰত অসমৰ 2জন বিহাৰৰ 4জন ঝাৰখণ্ডৰ 15জন উত্তৰ প্ৰদেশৰ 8জন পশ্চিমবংগৰ 3জন আৰু উৰিষ্যাৰ 5জন আছে লগতে উত্তৰাখণ্ড আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ উত্তৰাখণ্ডৰ 2জন আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ 1জন আবদ্ধ হৈ আছে আপুনি চাই আছে আবেলিৰ সংবাদ বুধবাৰে মুম্বাইৰ ৱাংখেড়েত পুনৰাবৃত্তি ঘটিব 2019 চনৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ 2019ৰ মানচেষ্টাৰত অনুষ্ঠিত ছেমিফাইনেলৰ দৰে এইবাৰো টিম ইণ্ডিয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাব নিউজিলেণ্ডে চলিত বিশ্বকাপৰ প্ৰদৰ্শনৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম ছেমিত আগবাঢ়ি আছে টিম ইণ্ডিয়া লীগৰ 9খন খেলৰ 9খনতেই টিম ইণ্ডিয়া জিকাৰ বিপৰীতে 5খন খেল জিকি কোনোমতে ছেমিফাইনেলত উপনীত হৈছে নিউজিলেণ্ডে পইণ্ট তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থান দখল কৰাৰ লগে লগে পুনৰাবৃত্তি ঘটিল বিগত বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেলৰ মানচেষ্টাৰত অনুষ্ঠিত সেই খেলত নিউজিলেণ্ডে বান্ধি দিয়া মাত্ৰ 240 ৰানৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল বিৰাট কোহলি নেতৃত্বাধীন টিম ইণ্ডিয়া 221 ৰানতেই থমকি ৰ'বলৈ বাধ্য হৈছিল ভাৰতীয় দল এবাৰ ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বত টিম ইণ্ডিয়াই 2019ৰ মানচেষ্টাৰৰ সেই পৰাজয়ৰ পুতক তুলিব বুলি আশাৰে বাট চাইছে দেশৰ কোটি কোটি ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে বেটিঙত সুন্দৰ ফৰ্মত আছে ৰোহিত শৰ্মা শুভমন গিল বিৰাট কোহলি কেএল ৰাহুল শ্ৰেয়াছ আয়াৰ সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ বিপৰীতে মহম্মদ শামীৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ পাছত শক্তিশালী হৈছে বলিং বিভাগ শামীৰ লগতে জসপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু মহম্মদ শামীৰ নেতৃত্বত এতিয়া পেচ আক্ৰমণে অনবদ্য প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ কুলদীপ যাদৱ আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ স্পিন আক্ৰমণেও হোলঠেকত পেলাইছে বিপক্ষৰ বেটছমেনক বেটিং বলিং দুটা দিশতে আগবাঢ়ি থকাৰ পাছতো ছেমিত জিকাৰ বাটত টিম ইণ্ডিয়াৰ সন্মুখত হেঙাৰ হ'ব পাৰে টছ ৱাংখেড়েত অনুষ্ঠিত হোৱা এইবাৰৰ বিশ্বকাপত টছে লৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা টছত জিকি প্ৰথমে বেটিং কৰা দলে জিকিছে খেল ৱাংখেড়েৰ শেহতীয়া 4খন খেলত দ্বিতীয় ইনিংছৰ প্ৰথম 10 অভাৰত পেচাৰৰ দখললৈ গৈছে 17টা উইকেট আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ গ্লেন মেক্সৱেলৰ ৰাজকীয় ইনিংছৰ বাহিৰে ৱাংখেড়েত দ্বিতীয় ইনিংছত সফল হ'ব পৰা নাই কোনো এজন বেটছমেন কাজেই বুধবাৰৰ ছেমিফাইনেলত ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল টছ দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসত গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ খুমটাৰ বিজেপিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া একাংশ সংবাদ মাধ্যমত বিধায়ক শইকীয়াই গুলীচালনা কৰা বুলি বাতৰি প্ৰকাশ কৰাক লৈ তেওঁ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে টিআৰপিৰ নামত এনেধৰণৰ মুখৰোচক বাতৰি পৰিৱেশনৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমক বিৰত থাকিবলৈ বিধায়কগৰাকীয়ে আহ্বান জনায় বিধায়ক আৱাসৰ তেওঁৰ ঘৰত গুলীচালনা হোৱা বুলি ওলোৱা বাতৰিও অস্বীকাৰ কৰে খুমটাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে বহুত মানুহ হৈছে মানুহ যাৰ মৃত্যু থাকিব সি মৰিব আজি সিকিউৰিটি কেতিয়াবা নিজৰ বন্দুক কেতিয়াবা নিজে ভাল কৰি থাকোঁতেও মানুহৰ মৃত্যু হৈছে কেতিয়াবা সিকিউৰিটি গুলি লাগিও মানুহ মৰিছে বা কেতিয়াবা সিকিউৰিটিয়ে বেয়া পায় নিজৰ অফিচাৰক মৰাৰ উদাহৰণো আছে কাৰণ এনেকুৱা এটা নিষিদ্ধ এৰিয়া কৰিব নোৱাৰে এইটো হাই সিকিউৰিটি যিটো মানুহে কয় যে হাই সিকিউৰিটি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে আমাক লগ কৰিবলৈ আহে আমি ফোন কৰি দিওঁ যে লগ কৰিবলৈ দিয়ক সেইজনী মোনাটো চেক নকৰে মোনাত কিজনী কিবা লৈ আহে বা আপোনালোকৰ বেগবিলাকতো চেক নকৰে আপোনালোকৰ পাছ থাকে কিন্তু বেগবিলাক কেমেৰাবিলাক চেক কৰে জানো অথচ ইউ পি নিচিনা জেগাততো এনেকৈ ৰিপৰ্টাৰ ৰূপ ধৰিয়ে দুজনক মৰা দেখিছিলোঁ চকুৰ আগতে সেইকাৰণে কাৰোবাৰ মৃত্যু থাকিলে কাৰোবাক মাৰিম বুলি ভাবিলে বিশেষকৈ আমাৰ MLA চেমএলএ এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় তো আমিতো পাব্লিকৰ মাজত ঘূৰিয়ে ফুৰোঁ নাজানো কেলে মই কেনেকৈ জানিম এতিয়া পিষ্টল চবৰে আছে আজিকালি কাৰ নাথাকে আছে লাইচেঞ্চ নথকা কোনে লৈ ফুৰে এইটো লাইচেঞ্চটো আৰু চবেই জানে আৰু মই ভাবোঁ যে বেছিভাগৰে আছে মোতকৈ বহুতৰ বেছিয়ে আছে এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই উত্তৰকাশীৰ চিলকিয়াৰা টানেলত আবদ্ধ হৈ থকা 40জন শ্ৰমিক ইতিমধ্যে আমি সেই খবৰটো জনাই আছোঁ অৱশ্যে আটাইকেইজন শ্ৰমিক সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে সেইটো ভাল খবৰ আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ অহৰহ অক্সিজেন আৰু সময়ে সময়ে খাদ্য যোগান ধৰাৰ লগতে জৰুৰী ঔষধ পাতিও তেওঁলোকক দি থকা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ ধামীক ফোন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে 6জনীয়া পেনেল গঠন কৰিছে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে চিলকিয়াৰা টানেলত আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰো 2জন শ্ৰমিক হৰাইজণ্টেল ড্ৰিলিং মেচিন নিয়া হৈছে আবদ্ধ টানেল মুকলি কৰিবলৈ 900 mm ব্যাসৰ প্ৰকাণ্ড পাইপেৰে আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক উলিয়াই অনাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে
প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক যেহেতু জনাই আছো আৰু শেহতীয়া তথ্যৰ বাবে পুনৰবাৰ আমাৰ সাংবাদিক সুনীলৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো। সুনীল, और क्या कुछ ताजा जानकारी है आपके पास? सुनील, क्या कुछ ताजा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल 55 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। हम ग्राउंड जीरो पे है इस समय। लगातार जो अंदर है जो कार्य है वो लगातार प्रगति पे है और ये जो सामने पे ह्यूम पाइप है इनको बिछाने का कार्य कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। जो लगातार जो टीमें हैं वो निरीक्षण कर रही है किस तरह से काम को अंजाम देना है, क्योंकि अगले जो 24 घंटे हैं वो काफ़ी वो रहेंगे और लगातार यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया जा रहा है। इस टनल से 200 मीटर आगे पे ही जो टनल है टूटा है और 50 लगभग बताया जा रहा है कि 50 से 60 मीटर तक टूट हुई है और जो मलबा है फैला पड़ा है उसके बीच से जो ह्यूम पाइप है वो निकाले जाएंगे और ये जो पाइप दिख रहे हैं यहाँ पे इनको वेल्डिंग करके बिछाया जाएगा। तो एक लंबा समय लग सकता है। 55 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। तमाम तरह की परेशानियों का सामना जो अंदर 40 मजदूर जो फंसे हुए हैं उन्हें 55 घंटों में करना पड़ा है। उनके लिए पाइप के थ्रू ऑक्सीजन और जो खाने की चीज़ें हैं वो भेजी जा रही है। कुछ देर पहले उनके लिए मेडिसिन भी भेजी गई ताकि किसी तरह की बीमारी से अगर वो ग्रसित होते हैं तो उस मेडिसिन का प्रयोग करके वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है अधिकारियों द्वारा और जो वो समय है जब ये पाइप बिजनेस शुरू होंगे तो उससे लेके 24 घंटे काफ़ी और रहने वाले हैं। तो इस समय कह सकते हैं कि जो ग्राउंड जीरो पे पूरी तरह से कार्य चल रहा है वो सभी की नजरें हैं कि सकुशल ये ऑपरेशन हो और जो 40 जिंदगी जो अंदर फंसी है उन्हें बाहर निकाला जाए। जी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन भी लाया गया है, उसका क्या कुछ सहाय मिल पा रहा है अभी तक? बिल्कुल मशीनें पहुंचा दी गई थी। रात में ही मशीनें पहुंच गई थी। 72 मीटर पाइप ह्यूम पाइप भी पहुंचा दिए गए हैं। सिर्फ प्लेटफॉर्म जो पहले बनता है उसके बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा। तो उसको बनाने की कार्रवाई लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जो ये ह्यूम पाइप है यो इनको बिछाने का कार्य शुरू हो जाएगा और वेल्डिंग भी वहीं पे किया जाएगा। तो एक लंबा प्रोसेस अभी भी लग सकता है, लंबा समय लग सकता है। इस बीच में उन जो अंदर मजदूर फंसे हैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। खाना हुआ, ऑक्सीजन, ये सभी लगातार सप्लाई की जा रही है जिससे जो 40 जिंदगियां हैं सर्वाइव किया कर सके, ये पूरी कोशिश है। और इस समय कई अधिकारी एक दूसरे के टच में है। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से अलर्ट पे पूरा जनपद है। पूरी एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंचे हुए, तमाम विभाग के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लगातार जो घटना स्थल है वहाँ पे नजरें बनाए हुए हैं। अंदर कार्य चल रहा है और बाहर पूरी तरह से जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है तैनात है। तो सभी की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए ताकि जो 40 जिंदगियां हैं जो पिछले 55 घंटे से अंदर फंसी हुई है उनको बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। और दुआओं का दौर भी इस ओर देखने को मिल रहा है क्योंकि 40 जिंदगियां हैं और अंदर पिछले 55 घंटे से फंसी हुई है। तो कोशिश यही है सबकी कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और जो 40 जिंदगियां अंदर फंसी है उनको जल्द से जल्द सकुशल रेस्क्यू किया जाए। जी एनडीआरएफ का डीआईजी का कहना है कि सुरंग खोदने का जो प्रयास है वो जारी है और 70 से 80 घंटा लग सकता है, ऐसा बोला है एनडीआरएफ के डीआईजी ने। बिल्कुल जो एक्सपर्ट की जो टीमें हैं उनका यही कहना है कि समय इसमें लग सकता है क्योंकि अभी तक ये मान के जो टीमें हैं ये चल रही है कि 50 से 60 मीटर जब ये पाइप बिछ जाएंगे तो हम जो जिस जगह पे ये घटना घटी है जहाँ पे टूट हुई है उसको क्रॉस कर जाएंगे। तो अगर ये दायरा अगर ज़्यादा बढ़ता है तो घंटे भी ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि 1 मीटर जो ह्यूम पाइप है 1 मीटर 1 घंटे में बढ़ेगा। अगर 60 मीटर यहाँ पे क्षति हुई है, अगर 60 मीटर तक पाइप बिछाने पड़े तो 60 घंटे लग जाएंगे। तो कह नहीं सकते कि कितना समय लग सकता है, पर प्रयास यही है कि अगले 24 घंटे काफ़ी क्रूशियल रहने वाले हैं। किसी न किसी तरह से नतीजे भी मिलने शुरू हो जाएंगे कि किस तरह से पाइप का कार्य चलेगा। तो ये अब जो अगले 24 घंटे इसमें क्लियर हो पाएगा कि स्थिति असल में क्या है और कब तक ये जो ऑपरेशन है इसको अंजाम दिया जाएगा। जी मजदूरों को खाना, पानी और ऑक्सीजन का दिया जाने वाला एक खबर भी है हमारे पास। कैसे वो वहां पर दिया जा रहा है, खाने में क्या कुछ दिया जा रहा है मजदूरों को?
बिल्कुल खाने और सबसे पहले जो एक गुंजाइश बची थी वो जो पाइप था, पानी का पाइप, उसके जरिए ही पानी भी पहुंचाया जा रहा है, जो ऑक्सीजन है उसी के जरिए भेजा जा रहा है। और जो खाने की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, खासकर चना, बादाम और मूंगफली, ऐसी चीज़ें जो पाइप है उसके जरिए प्रेशर लगा के दूसरे छोर पे भेजा जा रहा है। और इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं वो भी भेजी गई है, ताकि किसी प्रकार की अगर किसी बीमारी से ग्रसित इस कंडीशन में जो मजदूर अंदर फंसे हुए होते हैं तो वो अपना इलाज खुद ही कर सकते हैं। तो तमाम प्रकार की जो प्रयास हो सकते हैं इस कठिन घड़ी में वो प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार 200 मीटर अंदर, इस टनल के 200 मीटर अंदर लगातार जो ऑपरेशन है लगातार चल रहा है। और किसी तरह से ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इन पाइपों को बिछा के जो 40 जिंदगियां हैं वहां तक पहुंचा जाए और उनको फिर सकुशल रेस्क्यू किया जाए। इस दौरान सभी एम्बुलेंस बाहर पे तैनात है। जैसी कार्य पूरा होता है तो तुरंत आनन फानन में इनको अस्पताल पहुंचाया जाएगा। तो ये सब जो प्रयास होते हैं ग्राउंड जीरो पे वो अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं। जो एक्सपर्ट की टीमें हैं वो लगातार निरीक्षण कर रही है किस तरह से क्या हालात अंदर है, किस तरह का प्रयास किया जा रहा है। एक दूसरे से वार्ता करके, सहयोग करके सभी प्रयास जो ग्राउंड जीरो पे होने चाहिए वो इस समय किए जा रहे हैं। जी प्रांजल जी। और एक बात जो अंदर से खबर आ रही है कि फिलहाल तो ये ऑक्सीजन, पानी, खाना ये सब वहाँ पर दिया जा रहा है, उसके साथ दवाई भी दिया जा रहा है, लेकिन अंदर कोई श्रमिक, कोई मजदूर का हालत गंभीर है क्या, ऐसा कुछ जानकारी है? बिल्कुल, सुबह भी कल भी लगातार जो पाइप है उसके जरिए ही कम्युनिकेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो कोशिश की जा रही है, वार्ता की जा रही है। और जो अंदर जो मजदूर है उनमें से एक को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो वहाँ से अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि मेडिसिन जरूर भेजी गई है, क्योंकि प्रशासन को पता है कि लगातार घंटे बढ़ते जा रहे हैं। 55 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और 55 घंटे अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि अभी भी कई घंटे और लग सकते हैं। तो जरूरी है कि जरूरी चीज़ें अंदर पहुंचनी जरूरी है। किस तरह से जो मजदूर है अंदर है उनकी हालत क्या है ये भी क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है। पर प्रयास यही है कि जो जरूरी चीज़ें अंदर पहुंच सकती है उन्हें पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है। और पानी, ऑक्सीजन और जो ड्राई फूड जो भेजे जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है इस समय, तो वो भेजे जा रहे हैं। और जो रेस्क्यू कार्य है उस पर लगातार नजरें यहाँ पे जो जिला प्रशासन है, जो बाहर की टीमें हैं वो लगातार बनाए हुए हैं और इस समय ऑपरेशन को अंजाम लगातार दिया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। या उत्तर काशीर পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালোঁ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট। এয়া আমাৰ সাংবাদিক কেইবাজনো তাত আছে আৰু তেওঁলোকে অহৰহ প্ৰতিটো তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছে। যিহেতু অসমৰো 2জন শ্ৰমিক তাত আবদ্ধ হৈ আছে, সেয়েহে এয়া হৈছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আমি পৰৱৰ্তী সময়তো এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম। কিন্তু এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই উত্তৰ কাছীৰ টানেলত আবদ্ধ 40 জন শ্ৰমিক। যৎপৰোনাস্তিৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে। বহুখিনি নতুন ইকুইপমেণ্ট অনা হৈছে, বহুখিনি মেচিন অনা হৈছে। সেই মেচিনৰ সহায়ত বৰ্তমান সেই সুৰংগটোৰ খনন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। যিটো সুৰংগ আধাতে ভাঙি পৰিছিল, যিটো সুৰংগত এওঁলোক এই শ্ৰমিকসকল প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত মাজভাগত ঠিক এটা নিৰ্দিষ্ট অংশত সেই সুৰংগটো খহি পৰিছিল। সেই অংশটো পুনৰ খন্দাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কিন্তু শ্ৰমিকসকল বৰ্তমান সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে। তেওঁলোকৰ বাবে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় ঔষধ পাতি, পানী এই সকলো যোগান ধৰি থকা হৈছে, সেইটো এটা ভাল খবৰ।